Hello, am I audible? That was we have to check. Hello, yes, I'm audible. So, hey guys, we are live, and today is day number 46 of our 100 Days of Code Challenge. And for the people who are here for the Infosys experience, assessment experience, I'm really sorry I could not share my experience after my assessment. I will share shortly. And I will also make a separate video, a short video that will contain all the queries related to Infosys. And right now we are going to continue our 45 days of series, like expanded series. Now it has become 100 days of code challenge. And we will complete all the remaining questions from the Strava's A to Z sheet. It has around 455 problems. We had solved only 265 problems as of now. So our goal is to complete all these problems in the remaining 55 days. Okay. So today is day number 46 and until day number 100 we are going to solve all the remaining problems, and the remaining problems are from sliding window two pointer combined problems. Some hard problems are remaining from this topic, and after that today we will start heaps. Okay. uh, Max-Heap, min-heap, and we'll try to solve all the problems related to heaps. Okay. After that we will learn about greedy algorithm. These are the topics which were most frequently asked in Infosys. Although my assessment is already done, I should have done these problems earlier, but I did not realize that these topics can be so important. I was focusing more on trees and graph and dynamic programming, although I could not learn all of these topics quickly. So now we will be learning all these concepts gradually, giving them enough time to grasp. Okay, after that, we will follow the same sequence that the Striver sheet has. Okay, and I should check the live chat. Oh, there's someone. Okay, hey Vamsavardhan. Bro, my exam was good, but they were expecting me to solve all the three problems, at least three problems out of four to get a interview call. So I could solve only one problem out of the four. It is okay. There's no one joining the stream. Okay, people might be doing their stuff. Am I audible, Vamsavardhan? Are you there? Am I audible, Vamsavardhan? Yes, I am. I can see it myself. And one more thing I wanted to ask, is our stream visible on the shorts feed also? Okay, forget it. We will see it later if it works on the shorts feed also or not.
Okay. Now today we are supposed to learn about heaps and we will do that later. First we will be solving the problem of the day on lead code, and from now onwards uh, every single day we will first solve the problem of the day on lead code. After that we will continue with regular concepts that we are supposed to do from the drivers it is at she's okay. So I've been solving problem of the day on lead code since last few days, like around 8 days. So we will be maintaining this streak from now on, okay? And it is already 10:50, so let's solve this problem from lead code problem of the day, and then we will get back to our drivers it is at sheet. um, भाई I could solve only one. तुम्हारा कैसा था नीरज भाई? नीरज पेप्सू? मतलब इजी वाला ही हो पाया, उसके सारे टेस्ट केसेस पास हो गए थे, बट बाकी मीडियम और हार्ड पे दिमाग ही नहीं लगाया, बिकॉज आई न्यू कि मुझसे नहीं होगा और इजी वाले को सॉल्व करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बट एग्ज़ाम के पहले तो इतना भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक क्वेश्चन भी सॉल्व होगा या नहीं होगा मुझसे, बट एक हो गया तो आई एम हैप्पी विद दैट। बट बट लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ वो एक होने का भी। आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे करते हैं। लेट्स नॉट लूज होप। So the problem is count odd numbers in an interval range. ये तो बहुत इजी है। Given two non-negative integers low and high, return the count of odd numbers between low and high inclusive. टू बी ऑनेस्ट मैंने ये वाला प्रॉब्लम ऑफ द डे इसलिए रखा क्योंकि ये इजी है और अब से मैं लाइव स्ट्रीम में ही सॉल्व करूंगा सारे प्रॉब्लम ऑफ द डे एंड ऑनेस्टली विदाउट चीटिंग, ओके। अरे ये लेकिन मैंने हिंट क्यों देख दिया? मैंने रीड नहीं किया, ठीक है, गलती से क्लिक कर दिया। ठीक है। बहुत वी आर गिवन टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अपने पास इंक्लूडिंग जीरो आल्सो, ठीक है, लो एंड हाई। We need to return the count of odd numbers between low and high inclusive. So what will be the count? Count will be the length of the range divided by 2, है ना? So if the first and the last number is a odd number, then the difference between them will be 4 by 2 plus 1. If both are odd, एक चीज देखनी पड़ेगी, if both the numbers are odd, the starting and the ending, that means low and high, then the number of odd integers between the range will be equals to length divided by 2 plus 1, है ना? That means 7 minus 3 by 2 plus 1 for the current case. And if both the numbers are even, let's say 2 and 6, 6 minus 2 will be 4 divided by 2 equals to 2, and the number of odds between 2 and 6 will be 3 and 5 only, that is okay. And if one is odd and one is even, let's say if the starting one is even and the last one is odd, let's say 7, then it will have 3, 5 and 7. And 3 minus 6 will have
Only one. One and two. So let's say if hello Vamsavardhan. I was talking to you, but you had left the chat already. So if low, bro, it was like decent. मतलब not decent यार, अच्छा नहीं गया, सिर्फ एक ही easy वाला problem solve हुआ, but it was better than expected. I was not even expecting कि easy वाला solve होगा, but solve हो गया. लेकिन there was a catch कि we have to solve at least three problems to get a interview call, and which was impossible for me in that type of environment. It's okay, Vamsavardhan, it's completely fine. Cylon. How to pronunciate that name? Cylon. If low modulus 2 is equals to 0 or high modulus 2 is equals to 0, then what we will do? Sorry. First we will do for both even. If both are even, for sure by let's go. शुक्ला जी आप ही हो ना ये? और दिस इज समवन एल्स, लेकिन कोई और कौन ही होगा? फॉर श्योर भाई, लेट्स गो. Y20, लेट्स गो फॉर अ मंथ, ऑल इंडिया टूर करके आते हैं. ओके, थैंक यू Vamsavardhan. He's saying better luck next time. And buddy, actually I'm shortlisted in Google event called Agentathon in Hyderabad. So I was discussing with my team. That's impressive, buddy. Event is on 20 and 21. All the best, bhai. हाँ, वेलकम वेलकम मार्शल मटेरियल. ऑल इंडिया टूर का बजट नहीं है मेरे पास तो कोई बात नहीं. शुक्ला जी है ना, शुक्ला जी कवर कर लेंगे जिस जिसको आना है. मेरे पास भी बजट नहीं है, बट आई विल टेक लोन फॉर दैट एंड विल कवर इट विथ ईएमआईज. जल्दी से ये इजी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. अगर दोनों इवन हुए तो वी विल रिटर्न हाई माइनस लो. क्या रिटर्न ही करना है ना सीधा. रिटर्न हाई माइनस लो बाय टू. मैं रिटर्न बोल रहा हूँ तो रिटर्न सुनाई दे रहा है क्या? हाई माइनस लो बाय टू. ओके, इट शुड वर्क. अदरवाइज अगर दोनों इवन नहीं है, देन वी विल रिटर्न हाई माइनस लो बाय टू प्लस वन. ओके, हाई माइनस लो बाय टू प्लस वन प्लस वन. लेट्स रन इट. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. यहाँ पे भी अगर मैं कुछ छोड़ रहा हूँ ना, गलत हो रहा हूँ, तो मुझे शर्म आनी चाहिए. ओके, चलो, काम हो गया. मेरा बजट कवर कर लो भाई. ठीक है, आ जाओ. वंशावर्धन का
बजट मैं कवर कर लूंगा, लेकिन जॉब लगने के बाद ना विथ इंटरेस्ट रिटर्न करना जो भी खर्चा होगा। ठीक है, आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे हो गया। आफ्टर दैट वी विल गेट बैक टू आवर स्ट्राइवर्स शीट। एक बार अपनी प्रोफाइल देख लेते हैं। डन। इफ एनीवन एल्स इज इंटरेस्टेड ऑन गोइंग टू वर्ल्ड टूर, इंडिया टूर करने के लिए चलना चाहता है कोई, तो कमेंट कर दो लाइव चैट में। बट इसके आगे मैं स्पॉन्सर नहीं करूंगा। अरे वंशावर्धन, मजाक कर रहा हूँ यार। जस्ट होप के मैं ही अपना पैकेज अपग्रेड कर पाऊँ। आई वोंट नीड एनीथिंग एल्स इन रिटर्न। We have solved 177 problems on lead code. Okay. अभी तक तो हैदराबाद भी अच्छे से नहीं देखा। एंड माई नेटिव इज हैदराबाद। सेम हियर बडी, मैंने भोपाल नहीं देखा अच्छे से अभी। मार्शल मटेरियल कुछ बोला नहीं। वी नीड टू लर्न अबाउट हीप्स। और मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना, वो हीप्स का ही था। और ऑल थैंक्स टू वन ऑफ माय फ्रेंड who had revised heap with me, and I could solve that problem. इंट्रोडक्शन टू प्रायोरिटी क्यूज। ये टॉपिक मैंने रिकर्शन बैकट्रैक्टिंग कहाँ से पढ़ना चाहिए। प्रो रिकर्शन तो आई वुड से के यूज चैट जीपीटी टू, मतलब इंटरैक्टिवली पढ़ो, किसी से भी पढ़ो। लाइक वॉच एनी ट्यूटोरियल दैट यू लाइक, मतलब जिसका भी तुम्हें पसंद है उसका ट्यूटोरियल देखो। अगर उससे समझ आता है तो वेल एंड गुड, कंप्लीटली फॉलो हिम। अगर वो बहुत ज़्यादा स्लो लगे या बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगे और डिस्ट्रैक्टिंग लगे कि लाइक समझ नहीं आ रहा है, ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो यूज़ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दो कि टीच मी recursion from basic to advanced and provide some easy problems to solve along. ओके, तो पहले वो कॉन्सेप्ट्स बताएगा, उसको समझने की कोशिश करना चैट जीपीटी से। अरे ही विल एक्सप्लेन इन योर नेटिव लैंग्वेज। अगर तुम्हें हिंदी में समझना है, इंग्लिश में समझना है, या फिर बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ समझना है, तो चैट जीपीटी इज़ देयर फॉर यू। ओके, तो मुझे यहाँ देखना चाहिए एक्चुअली। हाँ, तो चैट जीपीटी का यूज़ करना। और उसके बाद में सॉल्व प्रॉब्लम्स। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो ना तुम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। जीएफजी पे जाना, उसके बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स जो होंगे ना, फिबोनाची नंबर और भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, उनको करने की कोशिश करना। एंड यू आर गुड टू गो। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सॉल्विंग प्रॉब्लम। कहीं से भी पढ़ो, कोई भी ट्यूटोरियल देखो, चैट जीपीटी से पढ़ो, कहीं से भी करो। कम टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक बार तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो ट्राई टू सॉल्व 10 to 15 प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दैट टॉपिक। ओके, जैसे अभी हम प्रायोरिटी क्यूज पढ़ने वाले हैं अभी। तो व्हाट आई डू, मतलब इस सीरीज में मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो स्ट्राइवल ए टू जेड शीट पे जाता हूँ। यहाँ पे अगर कोई आर्टिकल लिखा हुआ है तो मैं उसको रीड करने की कोशिश करता हूँ, उससे समझने की कोशिश करता हूँ कि समझ आता है या नहीं। वैसे तो पहली बार जब मैं प्रायोरिटी क्यू समझ रहा था या पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। लेकिन लकीली कल जब मेरा एग्जाम था ना, उसके पहले मेरा फ्रेंड रिवाइज कर रहा था कुछ मेथड्स और फॉर्मूलाज जो रिपीटेडली यूज होते हैं कोडिंग में। तो ही वाज आल्सो रिवाइजिंग प्रायोरिटी क्यू, एंड ही मतलब व्हाइल ही वाज रिवाइजिंग फॉर हिमसेल्फ, ही एक्सप्लेन्ड इट टू मी कि प्रायोरिटी क्यू क्या होता है। प्रायोरिटी क्यू बेसिकली मिन हीप और मैक्स हीप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। रोहित कुमार, अच्छा ठीक है, मैं कंटिन्यू करूंगा यहीं से। पहले चैट का आंसर कर देते हैं। हाउ वाज योर इन्फोसिस एग्जाम भैया? ब्रो, आई कुड सॉल्व वन इजी प्रॉब्लम
जो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझसे सॉल्व होगा, बट लकीली आई कुड सॉल्व दैट, बट इट डिड नथिंग गुड क्योंकि आई हैड टू सॉल्व एट लीस्ट 3 प्रॉब्लम आउट ऑफ 4, which was really very difficult for me. So I gave up after solving one problem in around 1.5 hour. Okay. And till now, I didn't see that city of Pearl called as IT World in Hyderabad. Even I don't know about it. Buddy, how did you got a thought of getting odd and even number by seeing low and high? I'm not getting different though. Bro, it was actually very easy. मतलब you have an idea ना कि 1 से लेके 10 तक या किसी भी नंबर तक या तो odd होगा या even होगा, तो there are chances that 50% are even, 50% are odd. And only thing you had to think about in that question is that if you are including the starting and the ending index, if you are including that starting and ending index, then you will return the half of the length between them or the interval, okay, plus 1, because the starting and the ending index is also included. Or sorry, if the start one of the starting or the ending index is odd, then you will add 1 into the half of the length, otherwise you will return the half of the length of the interval. मुझे यहाँ देखना चाहिए, मेरी चैट यहाँ है लेकिन I should add. Okay, now I'm good. मैं यहाँ से चैट पढ़ के यहाँ आंसर कर सकता हूँ. Okay, now we should start priority queue. तुम लोगों ने priority queue पढ़ रखा है क्या? Any one of you? Let's learn about priority queue. मैं क्या बता रहा था, मैं कैसे पढ़ता हूँ. मैं पहले स्ट्राइवर शीट को खोलता हूँ. स्ट्राइवर शीट पर जाके जो भी टॉपिक मैं पढ़ने वाला हूँ उससे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल होता है तो मैं उसे ओपन करता हूँ. आई ट्राई टू रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ आई कैन. Otherwise, I will go to ChatGPT and ask him to explain that particular topic and how I can learn from it. Vamsavardhan is saying my thought was getting a for loop and count the odd numbers. It is okay. मतलब initially ऐसे ही thoughts आते हैं, मतलब intuition आता है, but it is not efficient क्योंकि तुम सारे odd even को count करने की कोशिश करोगे, but you have to think efficiently. अरे it is simple maths यार, मतलब it's okay. मतलब practice करो, you will get these intuitions by yourself. जैसे मैथ्स करते हैं तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आता, लेकिन बार बार वही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते ना कुछ एफिशिएंट मेथड्स आने लगते हैं, राइट? तो ट्राई टू सॉल्व मोर सच प्रॉब्लम्स, ऑल्दो इट वाज easier one. Okay, now let's read about priority queue. Priority queue क्या होता है? Priority queue is a special type of queue where each element is assigned a priority, and instead of being processed in the order they are arrived, like normal queue, the element with the highest priority is always processed first. If two elements have the same priority, they are handled based on their insertion order. Okay. Think of it like an emergency room in a hospital. Patients are not treated just by arrival time, but by how critical their condition is. Someone with a heart attack gets attention not based, before someone with a cold, regardless of who came first. This makes a priority queue upper super useful in scenarios like task scheduling, pathfinding algorithm, and real-time systems. And then there is binary heap. Okay, प्रायोरिटी क्यू समझ आया क्या? स्कैलिड्रो, आई विल एक्सप्लेन इट क्योंकि मुझे अच्छे से समझ आ गया आफ्टर डूइंग दैट इन्फोसिस का एग्जाम. उसमें जो मैंने इजी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया ना, वो प्रायोरिटी क्यू का ही था. आई विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट दैट प्रॉब्लम once we learn about priority queue. Okay. A binary heap is a binary tree that satisfies the following condition. It should be a complete binary tree, and it should satisfy the heap property. And what is heap property? That the tree in which all the levels are completely filled except the last level, and last level is filled in such a way that all the keys are as left as possible. That is a complete binary tree. And heap property, binary heap is either a min heap or max heap.
तो हीप प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो हीप है इट कैन ईदर बी मिन हीप और मैक्स हीप एंड oh Chinta Vamsavardhan, you have your another account with there us on the live chat. Proper okay, sorry, I got distracted. Binary heap is either a min heap or max heap. Property of the binary heap decides whether it is a min heap or max heap. Min heap property for every node in a binary heap. If the node value is less than its right and left child value, then binary heap is known as min heap. The property of node's value less than its children's value is known as min-heap property. In min-heap, the root value is always the minimum value in the heap. Okay, okay, Vamsavardhan. So let me explain what is a priority queue and then we will talk about heap. Uh, where should we continue? On the right side. Okay, let's do it below. Mm, below trees. Okay, and today's topic is priority queue. So as we read, okay, I will explain priority queue. Priority queue क्या होता है पहले तो queue is a linear data structure in which the insertion of elements is done on one end and removal of the element is done from another end. Okay, suppose this is a queue. Okay, why is it not visible? इसको थोड़ा show भी करता हूँ and let's okay, let's say this is a queue. Okay, it is क्यू के बारे में तो पता है ना जैसे लाइन में खड़े होते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले आएगा वही पहले जाएगा सो लेट्स से दिस इज लाइक टनल ओके जो पहले टनल के अंदर जाएगा वही टनल से पहले बाहर आएगा ओके एंड इट हैज टू एंड्स इट इज द फ्रंट और व्हाट वी से रेयर और बैक ये फ्रंट एंड है और ये बैक एंड है जो भी है सो इस एंड से ना लाइक डेटा इंसर्ट होता है इस एंड से डेटा एग्जिट होता है एंड व्हाट इज अ प्रायोरिटी क्यू let's say when we are giving numbers such as 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay we are giving these number in this order there are only 6 blocks so इसको कम करके 6 कर देते हैं so suppose these are the numbers inserted in the same order okay so the number which is inserted first will exit first okay तो मतलब जैसे 1 पहले आया 2 बाद में आया 3 उसके बाद आया 4 उसके बाद आया 5 उसके बाद आया एंड देन 6 आया तो जो रिमूवल होगा वो उस नंबर का पहले होगा जो नंबर पहले इंसर्ट हुआ ओके
insertion of that element will be done first, which was arrived first. ये सिंपल क्यू होता है। क्यू के बारे में तो पता ही होगा। बट प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा कि एवरी डेटा और इंटीजर will has have its value. Okay, like in hospital, if the case is very serious, it will be treated first. Okay, समझ आ रहा है या नहीं? मैं बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ ऐसे ड्रॉ करके, तो इसको हटाते हैं। देखो, सिंपल क्यू में तो यही होता है कि यहाँ से इंसर्शन होगा। ओके, वन बाय वन, और जो भी पहले आया वो मूव फॉरवर्ड करता जाएगा, या फिर सिंपली सपोज जो पहले आया वो यहाँ इंसर्ट होगा, जो उसके बाद आया वो उसके पीछे लगता जाएगा लाइन में। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 सिंपली। एंड जब एग्जिट करने की, ओके, नो ड्राइंग इज रिक्वायर्ड नाउ, आई गॉट इट। सो इतना समझ आ रहा है कि जो नंबर पहले इंसर्ट होगा वही पहले रिमूव भी होगा। तो जब इसको रिमूव करने की बारी आएगी तो सबसे पहले फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है जो सबसे पहले आया वो रिमूव होगा। ओके, ये कब होता है? नॉर्मल क्यू में। इट इज अ नॉर्मल क्यू। ओके, नॉर्मल क्यू। बट प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है? प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा? प्रायोरिटी क्यू में सपोज जो नंबर पहले आया वो इंसर्ट तो पहले होगा, बट जो अरेंजमेंट होगा ना वो उनके प्रायोरिटी के बेसिस पे होगा। जैसे कि इमेजिन वन वन रिप्रेजेंट्स कॉमन कोल्ड और फ्लू। मतलब तुम हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल में लाइक देयर आर बेड्स एंड, मतलब डॉक्टर्स, नॉट बेड्स बट डॉक्टर्स। ना प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा? प्रायोरिटी क्यू में किसी एक को प्रायोरिटी दी जाएगी। मिन हीप या मैक्स हीप समझ लो, तो मैक्स हीप समझेंगे अपन। तो वी रिसीव्ड 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 1 2 3 4 5, लेकिन अगर ये मैक्स हीप है तो व्हाट इट विल डू, सपोज के सारे नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 सब इंसर्ट हो गए, बट इनका अरेंजमेंट इस ऑर्डर में होगा, उनकी प्रायोरिटी के ऑर्डर में। जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है ना वो पहले रिमूव होगा। तो ये इंटरनली ना, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है उसको आगे ले आएगा। तो प्रायोरिटी क्यू में जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो सबसे आगे इंसर्ट होगा। सपोज के वन वाज इंसर्टेड फर्स्ट। ओके, तो ये रैंडमली कहीं भी स्टोर हो जाएगा, लेकिन वन के बाद अगर टू आता है तो टू को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी और टू वन के आगे खड़ा हो जाएगा। देखो, ऐसे समझ आएगा। लेट्स से दिस इज अ क्यू ऑफ पीपल। अरे स्टूडेंट्स की क्यू है समझ लो। ठीक है, ये क्यू है और ये सबको जाना है इस डायरेक्शन में। ओके, यहाँ पे टिकट काउंटर है या समथिंग, यहाँ पे टिकट काउंटर है। अब ये सब लोग आए सेम टाइम पर है। अगर नॉर्मल क्यू होगा तो यहाँ पे ये जो सबसे पहले आया उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, जो उसके बाद आया उसको अगली प्रायोरिटी मिलेगी, फोर्थ वाले को उसके बाद, और जो सबसे लास्ट में आया उसको लास्ट प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा? प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा कि एक प्रॉपर्टी असाइन की जाएगी कि जो पहले आया उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, या जो लास्ट में आया उसको प्रायोरिटी देनी है, या फिर उनका कोई वेट होगा। कि सपोज इनका कुछ मतलब वैल्यू है इन द रेंज ऑफ 1 to 10। तो जो सब जिसकी वैल्यू 10 है ना उसको पहले ट्रीटमेंट मिलेगा या फिर उसको पहले टिकट मिलेगी, और जिसकी वैल्यू 9 है उसको उसके बाद, एंड इन द सेम वे इट विल गो।
हर्षल पटेल, ब्रो, आई एम लर्निंग जावा, मतलब not learning but using Java to solve problems in Strava's A to Z sheet. Okay, and this is the ticket counter, whatever you call it, जो भी इन लोगों को चाहिए. आई होप यू गॉट इट. और प्रायोरिटी क्यू का इम्प्लीमेंटेशन सेम है, जैसे क्यू को बनाते हैं वैसे प्रायोरिटी क्यू को बनाते हैं. और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, मिन हीप बनाता है. अब हीप के बारे में और बताता हूँ. मिन हीप और मैक्स हीप क्या होता है. लेट्स से सबसे पहले बनाया मिन हीप बनाते हैं. तो मिन हीप में क्या होगा, मिन हीप में जो मेन नोड होता है ना वो उसके चाइल्ड नोड से छोटा होता है. दिस इज अ मिन हीप, जिसका जो रूट नोड होगा ना वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, या फिर जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी. ओके, मिक्स क्यों लिख रहा हूँ, मिन हीप. ओके, मिन हीप. व्हाट वाज द क्वेश्चन आई सॉल्व. फूड टेस्ट, समथिंग लाइक काउंट द टेस्ट पॉइंट्स ऑफ फूड. देखो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था. यू हैव एन एज एन इनपुट, ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ टाइप ऑफ फूड. जैसे चिल्ड्रंस डे पे तुम फूड स्टॉल्स लगाते हो ना, तो वैसे ही यू हैव एन नंबर ऑफ फूड टाइप्स, मतलब स्ट्रीट फूड समझ लो. ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंटीजर इनपुट होगा 3, दैट इज द टाइप ऑफ फूड यू हैव. ओके, so let's say you have three types of food, 1, 2, 3, ठीक है. एंड यू कैन टेस्ट ईच फूड एन नंबर ऑफ टाइम्स. तो एन भी गिवन होगा. फर्स्ट इनपुट तो एन था 3, एंड उसके बाद में एम होगा. दिस इज एन इज इक्वल्स टू 3. मैं सैम्पल टेस्ट टेस्ट केस बता रहा हूँ. और सेकेंड इनपुट था एम, एम इज इक्वल्स टू लेट्स से 5. और 5 क्या है, 5 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन टेस्ट ईच फूड. ये है नंबर ऑफ टाइप ऑफ फूड, नंबर ऑफ टाइप ऑफ फूड. Okay, or m is the number of times you can taste each food. Not each food, like taste any number of any food. That is number of times, number of time you can taste any of the food. Can taste any of the food. Okay, these are the two inputs. After that, there are n inputs, integer inputs in n lines. Okay, तो यहाँ जीरो से लेके एन लाइन तक एन इनपुट्स होंगे जो बताएंगे टेस्ट पॉइंट फॉर ईच फूड. लेट्स से देयर आर 3 फूड्स, तो एक एरे गिवन होगी, ठीक है, जिसकी लेंथ होगी 3, 0 1 2 3, 0 1 2. तो जो फर्स्ट लाइन है इट विल रिटर्न द फूड पॉइंट, लाइक टोटल टेस्ट पॉइंट, सॉरी टेस्ट पॉइंट बोलते हैं उनको. तो जैसे फर्स्ट फूड है उसका टेस्ट पॉइंट होगा लेट्स से क्या था, 3. और फर्स्ट वाले का था 5, 3, 5 एंड 7.
ये एग्जैक्ट टेस्ट केस था, सैंपल टेस्ट केस था उसमें। ये सेकंड है और वो फर्स्ट है एक्चुअली। ठीक है, वो 1 से n होगा। मैं अभी क्या बता रहा हूँ, मैं इन्फोसिस का क्वेश्चन बता रहा हूँ जो मैंने सॉल्व किया था। ठीक है, ये 1 से लेके n तक इंटीजर एरे होगी। ठीक है, और उसमें जो फर्स्ट वाला फूड है उसका टेस्ट पॉइंट है ये। ठीक है, टेस्ट पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइप। ओके, and the second food has taste point of 5, and the third food has taste point of 7. Okay, तो ये सेकंड फूड है और ये थर्ड फूड है। तो एक और चीज़, अच्छा पूरा लिख ही देता हूँ। तो the first line of input con consists of an integer n, which is the number of type of food you have, and next line has an integer input m, which is the number of times you can taste each any of the food, sorry, any of the food. And then next n lines consist of n integers representing the taste points for each food. ओके, तो इसका मतलब है कि एक एरे गिवन है जिसमें मतलब सारे फूड्स के लिए टेस्ट पॉइंट्स गिवन है। ओके, तो if n is the number of type of food, then there is an array which contains the taste point for each food. After that there is another array of size n which contains n decay points. Bro, I have not graduated yet. I am in my final year. I've completed my 7th semester and उसके भी practicals अभी बाकी हैं. So I've just given final semester exams of my 7th semester. Okay. There is another array of size n which contain n decay points. तो इसको ऐसे बता देता हूँ. If sample test case क्या था? अच्छा मुझे पूरा बताने दो. इसके बाद में एक और एरे होगी, साइज उसका n ही होगा. इट कंटेन्स द डिके पॉइंट फॉर ईच फूड दैट आई एम फ्रॉम LNCT भोपाल. नाम तो सुना ही होगा. इट इज़ अ प्राइवेट कॉलेज, tier 3 कॉलेज. इट इज लोकेटेड इन भोपाल. दैट इज फॉर ईच फूड, पॉइंट्स फॉर ईच फूड दैट यू कैन टेस्ट. अब इसमें कैच क्या है? एवरी टाइम you taste a food, you add some taste points in your total taste points. Okay, but when you taste a food more than
once its points gets updated by a factor that is vi minus di into ti minus 1. Okay, where pi is the where इसको समझ लो pi is equals to where pi is the taste points for food ith food tasted for the ith time. ओके, इसका मतलब ये हो कि तुम अगर सेम फूड को दोबारा खाओगे तो उसका टेस्ट पॉइंट अपडेट हो जाएगा इस पॉइंट से, एंड यू हैव टू रिटर्न यू हैव टू मैक्सिमाइज द टोटल टेस्ट पॉइंट्स. तो इसमें सिंपल क्या है, एन नंबर ऑफ टेस्ट टाइप ऑफ फूड्स गिवन है. हेलो पर्व चौधरी जी, हाउ आर यू? छोड़ो यार इस क्वेश्चन को. इन्फोसिस किसने पूछा था? रोहित कुमार, आर यू स्टिल देयर लिसनिंग टू मी? हाँ भैया मिल जाएगी, आ जाओ. लेट मी कंप्लीट इट. यू हैव टू मैक्सिमाइज द टोटल टेस्ट पॉइंट्स. इतना ही क्वेश्चन था. और सैम्पल टेस्ट केस ऐसा था कि इफ द फर्स्ट लाइन कंटेन्स n is equals to 3 and m is equals to 5, then the next line is contained 3, 5, 7. These are the actual test points for. इट इज़ कम्प्लीटली फाइन ब्रो. हर्षल पटेल. मैं भी फाइनल ईयर में हूँ. मैंने भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जब मेरा 7 सेमेस्टर आधा हो चुका था इन सितंबर. ओके, तो मैंने एकदम एरे स्ट्रिंग से स्टार्ट किया था. एरे स्ट्रिंग भी नहीं, एकदम बेसिक प्रोग्रामिंग से स्टार्ट किया था. बट मैं उससे पहले कई बार कोशिश कर चुका था बेसिक्स पढ़ने का, तो एरे पे आके रुक जाता था. मेरे को बस एरे तक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, उसके आगे मुझे कुछ नहीं आता था जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी. तो यू कैन ऑल्सो डू दैट. अभी भी टाइम है, तुम्हारे पास पूरा 8 सेमेस्टर बाकी होगा. ओके, तो कीप पुशिंग भाई. मतलब कुछ ना कुछ तो करते रहो. क्योंकि जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो यू शुड बी रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि अपने माइंड में ही रहता है. अ, जब तक मैंने मतलब रेगुलर कोडिंग करना स्टार्ट नहीं किया था तब तक मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर सकता हूँ वो भी मैं नहीं सॉल्व कर पाता था, सेल्फ डाउट की वजह से. आर यू गेटिंग? और मैंने बिल्कुल लिटरली लॉजिक बिल्डिंग, ये नो बेसिक मैथ्स यहाँ से स्टार्ट किया था. स्ट्राइवर की शीट फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था मैंने. व्हेन आई रियलाइज के प्लेसमेंट नहीं हो रहा है एंड आई एम नॉट गेटिंग शॉर्टलिस्टेड फॉर कंपनीज, only then I started regular problem solving. And if I can do that, you can also do it, bro. You have started with C language. It is okay. मतलब it doesn't matter कि तुम किस लैंग्वेज में कर रहे हो, but you should be able to solve problems. जो जिस भी लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो और जल्दी सीख सकते हो उसमें करो. बट सी सी इज नॉट द लैंग्वेज, मतलब टू बी लर्निंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्योंकि सी तो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है. सी प्लस प्लस में करो.
क्योंकि सारे डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि सी में ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं लगते, राइट? यही डिफरेंस होता है सी सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस में यू, मैं रॉन्ग, मैं भूल गया। सर आर यू इन सेवेंथ सेम? यस ब्रो, आई एम इन सेवेंथ सेमेस्टर एंड यू कैन कॉल मी हर्षित or bhaiya. And sir is also okay, but I'm not teaching right now. I'm learning myself and documenting my journey. Okay, let's get back to the topic. Where were we? And where are you from, Gaurav Singh? In which semester you are right now? Then I will start learning about heaps. And Harshal Patel, from which college you are, buddy? You can also share about you. You're in fifth semester. And from which college, Gaurav bhai? And how is your preparation going? Have you started learning DSA, Gaurav? VIT Pune, that's a good college. VIT भोपाल में तो अलग ही कांड हो गया ना. AKGEC, from where is it, buddy? I've never heard of AKGEC. Ghaziabad. Okay, okay, okay. Got it. And how is your preparation going? And Harshal Patel, I'm also your, like, I'm not your senior. I'm in the same year as you are. Okay. So you can call me by my name. Gaurav, have you studied about priority queue or just queues? And in which language you are solving DSA? Have you solved problems related to priority queue? If you have, then we can solve them together. Sorry. Okay, let's get back to priority queues. Uh, min-heap, what we do in min-heap, for every node in a binary heap, if the node value is less than its right and left child value, then binary heap is known as min-heap. Known as min-heap property. In min-heap, the root value is always the minimum value. Harshal Patel is saying, I think is we are also told to build some projects, and for that, we also will have to learn some AI and machine learning and also Python databases. So actually, how should I proceed? Bro, you don't need to do everything by yourself. Like, to be honest, mm, मैंने भी projects बनाए हैं, but I have not written the end-to-end code by myself. Okay. Or when appearing for mass recruiters, when I am giving interviews, they are not even interested in going in depth of the project. They just want to know if you have made some project by yourself or not. And are you aware of the technology that you have used to build that project? Okay. And most of the time, 70 to 80% of the time, they are just asking DS, CS fundamentals, DSA and CS fundamentals. They will go through your resume, and whatever you have written in your resume, they will ask questions related to that.
mostly from object-oriented programming, data structures and algorithm, operating system, networking, and BBMS queries. Most of the time, these are the questions that they ask in the interview. So you just need to make a project somehow. Either you can get the code from somewhere, or you can make it with the help of AI. Okay. And nowadays, you can literally make a full-fledged website using AI. So make use of it. Okay. In just few hours. Okay. Yeah. That is what I'm telling. So first of all, मतलब just to appear for the interviews, I'm not telling कि कभी सीखना ही नहीं. For you should learn, but for getting the first offer, the entrance to the industry, you don't have to waste so much time if you don't have time. But if you are in first year, second year, you have time, you should learn. But for someone who is in final year like me and has matlab, because of some reasons could not make projects and learn web development or any sort of technology to build projects, then you should not waste time learning at the last moment, right? And they are not going to ask 90% of the thing you are going to learn. So focus more on how you can get through it. Any books that I can read to get more about AI from basic? Bro, why would you have AI, bro? AI will teach you more about AI than any book. Okay. So use all the AIs more frequently. Learn about different models, test them, how they respond. Use Gemini, use ChatGPT, use Grok, right? They will teach you more. Like, even I would say that I'm less competent than AI. Okay, let's get back to our Max-Heap and Min-Heap. Anything else you want to ask Harshal Patel? Yes, bro, I stream daily, and from today, I will be streaming every single day. And if you want to stay connected, you can also join our Discord server. And I'm trying to bring more enthusiasm to our community where we can help each other grow and build consistency and discipline. For sure, buddy, you can also come if you are not stuck. Okay, not only when you are stuck, but you can come to appreciate me and motivate me as well. Okay. And I suggest you to join our Discord server as well. You can DM me there directly if you need any help. But how is your current scenario? Bro, right now I have my first offer from Capgemini and I want to upgrade. That is why I'm working harder. And I had started streaming and learning DSA properly in this September 2025, and I had streamed continuous matlab, not continuously but consistently every single day for 30 consecutive days. And after that I appeared for Capgemini's interview, and I am telling you honestly that it had helped me a lot. मतलब अगर मैं ये स्ट्रीमिंग स्टार्ट नहीं करता तो शायद मैं वो ऑफर क्रैक नहीं कर पाता जो मैंने किया. And just 30 days, I'm telling you, 30 days of consistency will give you all the results you want. Just promise yourself that for the next 30 days, you are going to be consistent with learning and coding. And once you get the opportunity, you will get it done. By tell me what is the selection process? Anshu, web dev or DSA? If you are in your final year, DSA is
the only thing. Okay. And for the web dev and projects, you can make projects using AI. But if you are in your first and second year, you have to balance both somehow. DSA is the utmost important when you're getting selected or like you're getting interviewed for इंटरव्यूड नहीं. जब भी सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले या तो एप्टीट्यूड राउंड होता है या कोडिंग राउंड होता है. भाई सब रेज्यूम बना रहे हैं. ओके, तुम भी रेज्यूम बनाओ. विच सेमेस्टर यू आर इन, अंशु बड़ी? You should also make your resume, and you should focus more on DSA and then web dev also. Like try to give at least 2 hours every single day to for DSA. And once you are comfortable with linear data structures, you're in fifth semester, you have enough time. In your fifth and sixth semester, try to master linear data structures: array, string, stack, queue, and linked list. ये 5 DSA topics cover कर लो and you are good to go. Then you can make your projects. Or projects में भी if you have enough time to learn web development, learn HTML, CSS, JavaScript and React. इतना इनफ है. बैक एंड करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन मेक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स और वो तुम रेज्यूम में भी डाल सकते हो. एंड दे आर sort of like enough to get an internship. Okay. In the sixth semester, try to get an internship. Otherwise, be prepared to solve DSA problems. क्योंकि जब तुम एट सेवेंथ सेमेस्टर में आओगे और जब कंपनीज तुम्हारे कॉलेज को विजिट करेंगी तो जब मेन मेन राउंड जो होता है जहाँ पे यू गेट शॉर्ट लिस्टेड इज द डीएसए राउंड. मतलब जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो तुम कर लोगे. इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स से तुम क्लियर कर लोगे एप्टीट्यूड राउंड. बट व्हेन इट कम्स टू कोडिंग, कोडिंग के लिए यू विल हैव टू प्रैक्टिस. लाइक अगर तुम्हारी डीएसए स्किल्स अच्छी होंगी तभी यू आर गोइंग टू गेट शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर द कोडिंग राउंड. तो डीएसए इज द मस्ट. ओके. Harshal Patel is saying, I'm finished with C language. I will do C++ with DSA. Should I do it from YouTube or any source courses you would refer me? Bro, when you are a beginner, अंशु, मतलब ये सारी क्लटर में अभी मत फंसो. जब तुम बेसिक टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हो तो गो विद द टॉपिक्स. पहले सारे बेसिक्स कवर करो. लाइक सिंटैक्स के बारे में, जैसे अगर तुम जावा कर रहे हो, जावा में कोडिंग कर रहे हो तो जावा के सारे बेसिक्स को कवर करो. एक दिन से ज़्यादा नहीं देना उसमें. ट्यूटोरियल्स देखने की ज़रूरत नहीं है लंबे लंबे. और बस तुम्हें सिंटैक्स सीखना है कि इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे जनरेट करते हैं, फोर लूप कैसे लगाते हैं, इफ एल्स कंडीशंस कैसे लगाते हैं, वाइल लूप, इफ, और सारे लूप्स वगैरह कैसे रन करते हैं. उनसे रिलेटेड कुछ चार पांच इजी प्रॉब्लम्स को ट्राई करो. अगर वो तुमसे बन रहा है उसके बाद में जस्ट jump on to arrays. Let me share you exact roadmap that you can follow. If you want this exact roadmap, DM me in the Discord server. I will share the exact roadmap with you guys there. Okay. I hope it is visible. Okay. My notion. ये तो इन्फोसिस का प्रिपरेशन है. बट कोड. Wait a minute. I'm sharing. Bro, join my Discord server. You can DM me there. Will talk to you there. You can call me on Discord. My username is Hercules on the Discord server, okay? And you can get the Discord server link in the description. Okay. Um, where is TSA? Here is the exact रोड मैप. ये रोड मैप मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से बनाया था जब मैं स्टार्ट कर रहा था. ओके. इन द मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर. ओके. और I asked ChatGPT to divide all the concepts in levels and in order of learning कि मैं किस order में सीखूं. तो these are the must
टू लर्न कॉन्सेप्ट्स। ओके, ये लेवल 1 एंड लेवल 2, ये जो 14 टॉपिक्स है ना, ये करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ यू वांट टू गेट प्लेस्ड इन एनी सर्विस बेस्ड कंपनी एज क्विकली एज पॉसिबल। तो सबसे पहले फंडामेंटल कोर कॉन्सेप्ट्स करना ज़रूरी है किसी भी लैंग्वेज का, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी etc। एंड देन इसके बाद ना मैथमेटिक्स एंड बिट मैनिपुलेशन, ये सेकंड पॉइंट होगा, ये फिफ्थ पॉइंट पे लिखा हुआ है। But you should do mathematics and bit manipulation. After that, you can learn recursion, basics of recursion, not advanced recursion. After that, learn about arrays, strings, and sorting algorithms. Okay, sorting and searching algorithms. और यही टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अगर तुमको चाहिए, आई हैव दिस चेकलिस्ट। If you want this checklist, DM me on Discord server. Like if you are learning about time and space complexity, after learning the theory of time and space complexity, you should solve these problems. These are sorted in the level of difficulty. Okay, और ये सारे मैंने ना चैट जीपीटी से जनरेट करा है। यू कैन ऑल्सो जनरेट बाय योरसेल्फ, अदरवाइज इफ यू वांट द एग्जैक्ट रोड मैप, पीडीएफ और ऑल द डेटा, आई कैन share with you guys। Okay, and for array, when you are learning array, learn solve these problems. Bro, you want sources to follow, you're learning C++, right? uh, अंशु, बोरिंग लगता है, इट इज बोरिंग भाई, मुझे भी बोर लगता था पहले, जब कोई भी स्ट्रीम नहीं देखता था मुझे बहुत बोर लगता था, लेकिन मैं फिर भी करता था। और बोरिंग लगेगा, हमेशा लगेगा। लाइक अभी थोड़ा मज़ा आने लगा है क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे हैं। और बोर इसलिए लगता है कि तुम सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखते रहते हो, ट्यूटोरियल्स देखने की जगह स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जैसे लेट मी शो यू कि जैसे ये एरे वाले प्रॉब्लम्स हैं, एरे में मैक्सिमम और मिनिमम निकालना आता है क्या, एरे को रिवर्स करना आता है क्या, एरे में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना आता है क्या। जब भी तुम ये एरे के बारे में पढ़ लो तो तुम ना बोर क्यों होते हो, क्योंकि तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने लगोगे और प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगी तुमसे, तुम्हें मजा आने लगेगा। जैसे जस्ट जब भी तुम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो ना, एक तो पूरा पूरा एकदम से पढ़ने की कोशिश मत किया करो ऑल एट वंस। पहले कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ो, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। एरे प्रॉब्लम्स, जी एफ जी ऐसे सर्च करना, जैसे तुमने एरेज के बारे में पढ़ लिया है, एरे का सिंटेक्स, एरे का बेसिक्स, देन गो ऑन। लॉजिक समझ में आता है बट कोड इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, बेसिक्स क्वेश्चन का भी। वो स्टार्टिंग में होता है बडी, मेरे साथ भी होता था, मेरे से टू सम वाला प्रॉब्लम नहीं बनता था। लीड कोड का सबसे पहला प्रॉब्लम है टू सम, मुझसे वो भी नहीं होता था। और मैं बहुत लाइक लिटरली, लेट मी शो यू, ये मेरा लीड कोड का प्रोफाइल है। ओके, और लीड कोड पे प्रॉब्लम्स पे जब जाते हैं तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है टू सम प्रॉब्लम। ओके, यू कैन सी इट। और आई एम शोइंग यू कि मैंने इसको कितनी बार सॉल्व किया है। मैं जितनी भी बार भी करता था इसको, और मैं लाइक लास्ट टाइम कैसे किया था मैं भूल जाता था, बट नाउ आई नो ऑल द वेरिएशंस के हाउ आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे सबमिशन पे जब मैं जाऊँगा, सी कि मैंने इसको कितनी बार अटेम्प्ट किया है। लाइक ये सारे सही सही लाइक सबमिशंस हैं, बट एक्चुअली आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व इट बाय माय ओन। जब मैंने पहली बार किया होगा ना 2024 में, सितंबर 24 2024, I was not able to solve it by myself. I asked the ChatGPT and copy pasted the solution. Then on January 17 2025, I came back and tried to solve the problem. तब भी शायद मुझसे नहीं हुआ था। और ऐसे करके मैंने कई बार इसी को सॉल्व किया है, सिर्फ पहला क्वेश्चन। और समटाइम्स आई ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट और ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेस। यू आर मोस्ट वेलकम अंशु भाई। आई जस्ट होप के मतलब यू डोंट वेस्ट योर टाइम, मतलब अभी इफ यू आर इन योर थर्ड ईयर, आई होप के यू यूटिलाइज योर टाइम, एंड जब तुम्हारे अपॉर्चुनिटी मिले तो यू गेट ग्रैब इट फर्स्ट।
ओके, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, बहुत इजी है, यू जस्ट नीड टू डू। और देखो, हर्षल whoever was asking for a roadmap or sources to learn, just follow Travis A to Z sheet. If you are good with English, you can follow Travis lecture also on YouTube. And if you want some other resources, you can follow Raghav sir on YouTube. देखो, whoever is learning Java, you can follow Raghav sir on YouTube. And if someone is learning C++, you can follow Striver's A to Z sheet or Striver's lectures also. And these are enough, like you will get hang of it. और for someone जो कि लॉजिक बिल्ड नहीं कर पा रहा है, लॉजिक समझ नहीं आता, कोड इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो ट्राई टू सॉल्व दीज इजी प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन। पहले ट्राई करो खुद से, अगर नहीं बनता है सॉल्यूशन देखो एंड ट्राई टू सॉल्व इट नेक्स्ट डे बाय योरसेल्फ। ओके, मतलब फर्स्ट टाइम कॉपी कर सकते हो, इट इज ओके, लेकिन अगर तुमने एक बार सॉल्यूशन देख लिया है तो नेक्स्ट टाइम ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ट्राई टू गिव डबल द टाइम टू सॉल्व इट। ओके, जैसे कि अभी तुमने एरे के बारे में पढ़ लिया है, तो लर्न अबाउट द सॉल्यूशन। ओके, तुमसे नहीं बनता है तो लर्न अबाउट द डिफरेंट अप्रोचेस कि कैसे तुम रिवर्स कर सकते हो एरे को, एंड ट्राई टू सॉल्व इट अगेन on next day by yourself। Okay, let's get back to heap. Insert, heapify, get min, extract min, delete, decrease key. These are the different methods representation of binary heap। भैया डेवलपमेंट साथ में करना चाहिए? आई वुड सजेस्ट कि नहीं, मत करो। फर्स्ट लर्न द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, मेक श्योर यू लर्न these topics, at least these topics। तो इतने स्टेप 1 से लेके स्टेप 9 तक के ये सारे टॉपिक्स अगर तुम कर लेते हो, आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट लर्निंग वेब डेवलपमेंट। और टू बी ऑनेस्ट, वेब डेवलपमेंट के बारे में जब यू आर गेटिंग इंटरव्यूड, यू आर अपेयरिंग फॉर असेसमेंट्स on your on campus companies, for your on campus companies, in the first round, the most important one is the coding round, if you are able to clear that coding round or not। तो कोडिंग राउंड के लिए यू जस्ट नीड डीएसए, नॉट डेवलपमेंट। ओके, एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इफ यू आर टारगेटिंग सम इंटर्नशिप इन योर थर्ड ईयर इटसेल्फ। तो थर्ड ईयर में अगर तुम इंटर्नशिप्स टारगेट कर रहे हो, स्टार्टअप्स को टारगेट कर रहे हो, देन यू नीड टू लर्न वेब डेवलपमेंट। So I would have suggested, if you were in your first, second year, I would have suggested to do web development more in your first and second year, and third year start doing DSA। But if you have missed your first and second year, I would suggest you to do DSA aggressively। जितना हो सके उतना ज़्यादा DSA पे फोकस करो in your third year, and once you clear all the, you will get good by doing। I was also bad when I started, to be honest। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं भी बहुत ही बुरा था डीएसए में। लाइक मुझे हैश मैप, हैश सेट समझ नहीं आता था कि ये क्या होता है हैश सेट। फिर मुझे समझ आया धीमे धीमे प्रॉब्लम सॉल्व करते करते कि ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है, उसके अंदर हैश सेट आता है, हैश मैप आता है, लिस्ट होती है, सेट होता है, मैप होता है। ये सब मुझे धीमे धीमे करते हुए समझ आया। यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यू हैव टू लर्न द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर तुम्हें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा जो तुमने नहीं पढ़ा है कभी, तो तुम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे खुद से। एंड देन, और जब तुम ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ोगे, तो यू विल रिमेंबर देम इन अ वे। मुझे कितना टाइम लगा? मुझे लगा 30 days, ओनली 30 days। एंड फॉर प्रूफ, यू कैन चेक आउट माई यूट्यूब चैनल। वहाँ पे मैंने स्टार्ट जब किया था ना, फ्रॉम द डे वन आई हैव बीन स्ट्रीमिंग। ओके, और आई हैड स्टार्टेड फ्रॉम कंप्लीट बेसिक्स।
स्क्रीन विजिबल है ना? लेट मी शो यू। और मैंने कंप्लीट डीएसए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने डीएसए कंप्लीट नहीं किया था, डीएसए अभी भी बाकी है। मैंने ट्री ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं वो मैंने अभी भी नहीं छुए हैं, जो कि मैं अभी करने वाला हूँ। ठीक है, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। एंड व्हेन यू गो ऑन लाइव स्ट्रीम्स एंड द ओल्डेस्ट स्ट्रीम, यू सी ये डे 1 ऑफ डीएसए, लाइक 45 प्रॉब्लम, 455 प्रॉब्लम्स इन 45 डेज। ये जब सीरीज देखोगे तुम, लाइक They डोंट changed, he वॉच modified इट the कंप्लीटली, मतलब ये मैंने बस डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्ट्रीम्स किए हुई थी, और मैं इनको बस रिवाइज करने के लिए देखता हूँ। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम blindly watching them, but take references from it, okay, how I did. For resources you should watch my streams, like skip करके देखना थोड़ा थोड़ा, बट ऐसा करते मत बैठना कि पूरा बस वही करे जा रहे हो, राइट? And I have also shared my experiences with interviews, like कैसे मैंने इंटरव्यू क्लियर किया, इंटरव्यू और असेसमेंट के पहले मैंने कैसे प्रिपरेशन किया, वो सब भी मैंने शेयर किया हुआ है। जैसे ये रहा, हाउ आई क्रैक्ड कैपजेमिनी टेक्निकल असेसमेंट, और टेक्निकल असेसमेंट के पहले मैंने कैसे प्रिपरेशन किया वो भी मैंने लाइक लाइव स्ट्रीम में शेयर कर रखा है। यू कैन वॉच दैट। यू कैन सी कि आई स्टार्टेड ऑन 3 months ago। ये डे 1 की वीडियो है, 1 सितंबर को मैंने स्ट्रीम करना स्टार्ट किया था। फ्रॉम दैट आई हैड स्ट्रीम्ड कंटिन्यूसली फॉर 34 days consecutively, okay, every single day. After that I did this company specific stream where I was preparing for the technical assessment, okay, and then I got shortlisted in the technical assessment. Then I was preparing for the interview. I have also streamed how I was preparing for my interview, and after the interview I have also shared my experience in the interview के इंटरव्यू कैसा गया, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं और कैसे मैंने उनको आंसर किया, कैसे कोडिंग करके दिखाया, वो सब मैंने शेयर किया हुआ है इस वाले स्ट्रीम में। आई जस्ट गेव माई कैप जेमिनी इंटरव्यू टुडे, ओके, एंड हाउ आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड, ओके, एंड यू कैन वॉच माई day 1 to day 30 स्ट्रीम्स फॉर रेफरेंस के हाउ यू कैन। स्ट्राइवर ने जावा में नहीं किया, यस, बट स्ट्राइवर की जो शीट है ना, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डीएसए के टॉपिक्स हैं, वो स्ट्रक्चर्ड वे में है, प्रॉब्लम्स लिस्टेड हैं स्ट्रक्चर्ड वे में। तो व्हाट आई डू, आई गो ऑन द स्ट्राइवर Z to Z शीट, उसमें जावा के लिए भी टॉपिक्स गिवन है कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना चाहिए जावा में। अगर तुम कोड कर रहे हो तो यू शुड लर्न अबाउट कलेक्शन फ्रेमवर्क्स। तो ये कलेक्शन फ्रेमवर्क्स तुम्हें आर्टिकल पे मिल जाएंगे। either you can use these articles to learn, okay, otherwise you can use any YouTube tutorial to learn the basic concepts, okay. Hmm, I hope it is clear now. Now let's get back to the thing that we were doing. Anshu, have you joined our Discord server, Mr. Anshu 3649?
Okay, here is the priority queue that we were talking about. So min heap में क्या होता है, जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है वो रूट नोड बन जाता है. ओके, एंड all the elements created to it becomes the child nodes. तुम पूछोगे कि इसका एडवांटेज क्या है, ये मतलब मेन हीप मैक्स हीप बनाना ही क्यों है. तो ये हेल्प करता है सॉर्ट करने को, कि रैंडमली कोई भी इनपुट आ रहा है कि यस प्रो. देखो इसका यूज क्या है, जैसे मिन हीप है कि सपोज रैंडमली पीपल आर इंसर्टिंग नंबर्स, या फिर suppose randomly people are putting some boxes of different heights. Okay, imagine these are the different heights of boxes, but if they are inserted in a priority queue, so what will happen कि जब तुम उनको रिमूव करोगे ना, जो भी बॉक्सेस तुमने इंसर्ट किए हैं, सपोज यू हैव इंसर्टेड these boxes in a priority queue, बट तुम जब उसके एलिमेंट को रिमूव करना स्टार्ट करोगे, व्हेन यू रिमूव इट, इट विल रिटर्न द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फर्स्ट. ओके, तो जो सबसे छोटा होगा. व्हाट डू यू मीन बडी? मनीषा वसंत, who wrote your written exam? Which written exam? I am writing my all the exams. Who, what are you talking about? Can you be more specific? What do you mean? Which exam you're talking about? My semester exam, or if you're talking about placements, there is no written exam. All the assessments are digitally on the computer. You got me distracted. Okay, let me continue. So प्रायोरिटी क्यू क्या करता है कि जो भी बॉक्सेस है ना उनको, मतलब ऑर्डर में अरेंज कर देता है, इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर.
By default, it stores the returns the minimum smallest element first. Okay, by default it will return the smallest element first. Okay, min heap बना देता है. और min heap क्या होती है? It creates a min heap. Okay, so it will return the smallest first. Got it. अच्छा, let's start solving problems on heaps. Okay, introduction to priority queue, we have learnt about it. Min heap, max heap, implementation. ये करते हैं on GFG. Min heap and max heap implementation. प्रायोरिटी क्यू करते हैं. A priority queue is a type of queue where each element is associated with a priority value and elements are served based on their priority rather than their insertion order. Elements with higher priority are retrieved or removed before those with lower priority. When a new item is added, it is inserted according to its priority. Okay, binary heap is the most common implementation of a priority queue. A min heap allows quick access to the element with the smallest value. Max heap allows the quick access to the element with the largest value. Okay. Binary heaps are complete binary trees, making them easy to implement using arrays. Using arrays provides cache-friendly memory access, improving performance. Min priority, max priority, min heap, max heap, array representation of binary heap. 45, 31, 20, 14, 7, 12, 18. Let me show you. अब जैसे कि मैं कह रहा था, ठीक है, यहाँ से करते हैं. Let's say we get elements in this order. क्या क्या थे? रिटर्न नहीं है क्या? 45, 31, 20, 14, 7, 45, 31, 20, 45, 31, 20, 14, 7, 12, 20, 14, 7, 12 या फिर 12, 7 से 7, 12, 18, 11 एंड 7. सो मैक्स हीप में क्या होगा कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, वो रूट नोड में स्टोर हो जाएगा. ब्रो, यू आर इन योर फिफ्थ सेमेस्टर ना? तुम्हारे फिफ्थ सेम के एग्जाम्स हो गए क्या, अंशु? तो अभी डीएसए करो और डेवलपमेंट तब करना जब तुम्हारे ये कॉन्सेप्ट्स के प्रॉब्लम्स तुमसे खुद से सॉल्व होने लगे. एक तो एरे सबसे इम्पोर्टेंट, देन स्ट्रिंग, एरे स्ट्रिंग्स, इसके बाद सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, सर्च, सॉर्ट,
ओके, सर्चिंग, सॉर्टिंग, और क्या होगा इसके अंदर ना, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ये दोनों टॉपिक करना ही मस्ट है, लीनियर एंड बाइनरी। एंड बाइनरी, और सॉर्टिंग के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग होती है ना, क्विक शॉट और मर्ज शॉट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक क्विक शॉट और मर्ज शॉट समझ नहीं आता, डोंट मूव फॉरवर्ड, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते नहीं आ जाते खुद से। अराउंड 50 to 100 प्रॉब्लम्स तुम खुद से सॉल्व कर पाओ, दैट इज इनफ। 100 to 50 प्रॉब्लम्स। ओके। क्विक एंड मर्ज शॉट। मतलब 50 to 100, नॉट 100 to 50। ओके, दीज टॉपिक्स करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इनसे रिलेटेड लाइक एवरी टॉपिक सॉल्व अराउंड 20 प्रॉब्लम्स। 10 easy, 10 medium, 10 easy, ये तो और ज़्यादा गंदी हैंडराइटिंग है। और ये सारे प्रॉब्लम्स तुम जब तक खुद से सॉल्व नहीं कर पाओ, तब तक डोंट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके। और ऐसे ही इन सब टॉपिक्स के इजी मीडियम प्रॉब्लम्स करने, और यू कैन जनरेट इजी प्रॉब्लम्स यूजिंग चैट जीपीटी। ओके। और जब जब तक ये चारों टॉपिक अच्छे से नहीं हो जाते, डोंट मूव टू एनी अदर टॉपिक और एनी अदर थिंग। और जब एक बार ये हो जाए, उसके बाद स्टार्ट लर्निंग डेवलपमेंट, बट don't stop solving DSA problems every single day. Solve at least one problems and keep learning new concepts in DSA. Okay, but you can dedicate some more time to development also. And let's continue with heap. What we are doing, binary heap. So give at least 30 minutes to solve by yourself. अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखो, आगे बढ़ो। सॉल्यूशन देखो, सॉल्व करो, और आगे बढ़ो। क्या करना है, सिंपली जैसे कि स्टार्टिंग के 10 प्रॉब्लम्स होंगे ना इजी वाले, फर्स्ट टाइम तुमसे नहीं बनेंगे वो। इजी रहते हैं, लेकिन व्हेन यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ टाइम्स, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम तुम्हें डिफिकल्ट ही लगेगा, बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो क्या करना है, 10 के 10 प्रॉब्लम्स को लेना है, और ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ देम बाय योरसेल्फ। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना, मे बी वो हो जाएगा या नहीं होगा। तो अगर नहीं होता है तो उस पर अटक के नहीं रहना, जस्ट गिव 10 to 15 minutes टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू सॉल्व इट। अगर हो जाता है तो गुड, अगर नहीं होता है तो मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 5 of 10 प्रॉब्लम्स। ओके, बाय योरसेल्फ। एटलीस्ट 5 of 10 प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। ठीक है, एनी हाउ, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, लेकिन कोशिश करो कि 5 प्रॉब्लम्स तुम खुद से सॉल्व करो, और द रिमेनिंग 5 सी द सॉल्यूशन। See the solution
एंड ट्राई टू रिमेंबर द अप्रोच नॉट द सॉल्यूशन। रटने की कोशिश मत करना कोड को, बस समझने की कोशिश करना। यू कैन रिमेंबर द इंट्यूशन, अप्रोच एंड द कॉन्सेप्ट, नॉट द कोड। ओके। और तुम एक हफ्ते तक ना कंसिस्टेंटली कोड करने की कोशिश करो, अपने आप तुम्हारी मसल मेमोरी में आ जाएंगी चीजें। तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा और कोड अपने आप तुम्हारे हाथों से लिख जाएगा। ओके। दिस इज अ बाइनरी हीप, जिसमें क्या कि जो हाईएस्ट और द लार्जेस्ट एलिमेंट है ना, इट इज अ रूट नोड। तो रैंडमली इंसर्टेड है, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ना रैंडमली हमारे पास आए हैं, लेकिन इसका जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हमने रूट पे स्टोर कर दिया। तो वेन एवर वी नीड द largest element of given sort of elements, we can use max heap to get the highest element efficiently. Okay, that is why we use it. Try it on GFG practice, and let's see implementation of priority queue using insert pop get max returns an element with maximum priority. Shift it on. PQ no priority queue. Okay, let us practice on Jersey. Given an integer array A, your task is to add these elements to the priority queue. Also given an array B, the task is to check if the given element is present in the priority queue or not. If the element is present, then 1 is printed by the driver code. After that, the max element of the priority queue is printed. Okay, 151413 -1 -1. Then driver code deletes the max. Here the driver code has implemented the priority queue as a max heap. Okay. Insert priority queue. Just insert k in queue and don't return anything. Queue dot code. Okay. And find priority queue. If k is in queue, return true, else return false.
Okay, add operation. It could be add not tool q dot add k, and then we need to find k in priority queue. Q dot pop. Will remove the maximum element. And we need to check if q q dot contain k. Let's run it. Compilation error. Return statement is missing. यहाँ पे तो कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होगा. यहाँ पे return, and here also we will return q dot poll. Let's run it, and it is working. Let's submit it. What time it is? I had started around 10:30, right?
Let us see. Let us solve this easy problem on lead code. Kth largest element in an array. ओ प्रायोरिटी क्यू का यूज करना है। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर दिया मैंने एरेज डॉट शॉर्ट का यूज करके। क्या शॉर्टकट था। बट व्हेन वी यूज प्रायोरिटी क्यू we will create a priority queue priority, right? Priority queue integer pq is equals to new back. And then for int I is equals to 0, I less than nums dot len I plus plus. We will do pq dot add nums of I. Okay. After that, kth largest element, right? What will be the kth largest element? First largest, second largest, third largest. So kth from the end. And what we will do, pq collections dot reverse order pq.
Okay. तो collections dot reverse order यहाँ लिखना होता है when we are initializing the priority queue. Let's submit it and see if it works. It works, but it is not the best solution. So this is how we implement priority queue, but we have done this problem जो कि पहले बहुत difficult लग रहा था. Kth smallest element in an array using priority queue. ये भी कर सकते हैं. Let us search it on GFG. Kth smallest element. Kth smallest element in a array using priority queue. GFG. Nice. Kth smallest element. Let's solve it on JFG using priority queue. Max-Heap. Max-Heap. Time complexity will be n of log k time. Quick select counting sort. Expected approach is always using priority queue. Okay, we will create a priority queue. Given an integer array ARR and an integer k, your task is to find and return the kth smallest element in the given array. So what we will do, we will just create a priority queue of integers. Okay, pq is equals to new priority queue. Okay, and then for int I is equals to 0, I less than arr dot length I plus plus. What we will do, pq dot add arr of I. Okay, and then for int I is equals to 0, I less than k minus 1 and k I plus plus. And what will we do, pq dot pop or poll. Okay, and after that we will return pq dot pop, and let us run it. पोल होगा, पॉप नहीं होगा. पुश एंड पॉप होना चाहिए ना. पॉप और कहाँ लिखा हुआ है. पोल, pq डॉट पोल. पुश पॉप तो स्टैक में होता है. और ऑफर कह सकते हैं, राइट. ऑफर एंड पोल. ऑफर का मतलब होता है इंसर्ट करना होता है. सबमिट कर दिया तो इट इज ऑल्सो डन. kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज डन. शॉर्ट के सॉर्टेड एरे. ये क्या प्रॉब्लम है. सॉर्ट के सॉर्टेड एरे. मर्ज एम सॉर्टेड लिस्ट. ये हार्ड है. रिप्लेस ईच एरे एलिमेंट बाय इट्स करस्पॉन्डिंग रैंक. टास्क शेड्यूलर एंड हार्ड प्रॉब्लम्स. डिजाइन ट्विटर. कनेक्ट एन लूप्स विथ मिनिमल कॉस्ट.
kth largest element in a stream of running integers. ये करते हैं kth largest element in the stream of running integers. You are part of a university admission office and need to keep track of the kth highest test score from the applicants in real time. This helps to determine. अच्छा रहने देते हैं आज इतना ही. We will continue from here tomorrow. Or should I continue? Today is 8th of December. You are part of a university admission office and need to keep track of kth highest test score from applicants in real time. This helps to determine cutoff marks for interviews and admissions dynamically. As new applicants submit their scores, you are tasked to implement a class which for a given integer k maintains a stream of test scores and continuously returns the kth highest test score after new score has been submitted. More specifically, we are looking for the kth highest score in the sorted list of all scores. Simply, we will do priority queue of integer pq is equals to new priority queue collections dot reverse order. Okay, and then for int I is equals to 0, I less than nums dot length I plus plus. What we will do, pq dot add nums of I. Okay, pq dot add nums of I into the pq, and then again run a for loop, but till I is equals I less than k. So I is equals to 0, I less than k. k हाँ kth लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना ना. ओके हाँ. ठीक है, इसको लिखते हैं पहले, देन वी विल ट्राई टू रन इट. ओके, रिवर्स ऑर्डर में तो मैक्सिमम विल गेट पॉप्ड आउट, बट पॉप थोड़ा ही करना है. पॉप करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा. Your task to implement a class for which given integer k maintains a stream of test scores and continuously returns the kth highest test score after a new score has been submitted. Looking for the kth highest score in the sorted list of all scores, implement the kth largest class. Initializes the object with integer k and the stream of test scores
nums. Okay, let's do it using Min-Heap. तो collections तो reverse order को हटा देंगे and first we will create integer array. Result is equals to new int of size nums dot line. Okay. After that, we will create priority queue integer pq is equals to new priority queue. After that, we will learn a for loop, and inside it, instead of adding the what should I do? We need to implement class for each given integer k, maintains a stream of test scores, and continuously returns the kth highest score after a new score has been submitted. We will check if pq dot size is less than k. If it is less than k, then we will simply add pq dot add nums of I. Okay.
सबसे पहले we needed to make for every string a value k and then a global priority queue of integer pq. Okay. Inside it, we will set this dot k is equals to k, ठीक है, and then pq is equals to new priority, सही है ना spelling priority की, q of size k, and then for each int num in nums if pq pq dot size is greater than k, sorry, less than, then we simply pq dot offer num. We will add the current integer into the priority queue, else if num is greater than pq dot peak, okay, then also we will do pq dot offer num, and then if pq dot size is greater than k, then we will do pq dot pool, and to add size, if pq dot size is less than k, then we will do pq dot offer value, else if value is greater than pq dot peak, then we will do pq dot offer value, and then pq dot pool. Then we will do pq dot peak. हाँ ठीक है, हाँ ठीक है.
See what are the other problems. Hmm, kth largest element in a stream of running integers. Sort k sorted array, merge unsorted list, task scheduler देखते हैं. What we need to do in task scheduler. Uh, you are given an array of CPU tasks, each labeled with a letter from A to Z and a number n. Each CPU interval can be idle or allow the completion of one task. Tasks can be completed in any order, but there is a constraint. There has to be a gap of at least n intervals between two tasks with the same label. Return the minimum number of CPU intervals required to complete all tasks. How can we implement priority queue in this? You are given an array of CPU tasks, each labeled with A to Z and a number n. ओके एक एरे गिवन है जिसमें टास्क गिवन है अपन को सीपीयू वाले and a number n. Each CPU can be idle or allow the completion of one task. Tasks can be completed in any order, but there's a constraint. There has to be a gap of at least n intervals between two tasks with the same label. A B idle, A B idle, A B. A B idle, A B idle, A B idle. After completing task A, you must wait two intervals before doing A again. The same applies to B in the third interval. Neither A nor B can be done, so you idle. By the fourth interval, you can do A again as two intervals have passed. So that means A, B, idle, A, B, idle, A, B, idle.
I think this is enough, and I am ending the stream in a few minutes. Let's play a chess match, and then I will end the stream. So no, bro, I have not started it again, but I could solve only around 265 problems. So I extended the 45 days into 100 days. So now I will be solving the remaining tree and graph problems in the remaining 55 days because those were difficult, and I also had my end semester exams due to which I could not continue. And what about you, Virat Kohli? What's going on? And in which semester you are right now?
You are also in seventh semester. You're in final year, right? Oh, sorry, I missed your question. Doing month stack currently MongoDB. That's great, bro. And what about DSA? Have you done DSA already? अरे नहीं. Wow, what a mistake he did. Checkmate coming. Oh, oh. Okay, not okay. Okay, that is all. That is what I am doing right now. मतलब जो इनिशियल बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनमें आई एम गुड नाउ. बट जो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं लाइक ट्री ग्राफ एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है. तो दैट इज़ व्हाट आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट 30-40 days.
What are the domains I have focused on? Bro, to be honest, uh, matlab, let me answer your first question. Okay, how many projects I have stacked on my resume? I have stacked two projects on my resume only. Okay, and both of them are completely stack projects. One is just simple, very simple to-do list project, and another is a full-fledged major project that I have made from scratch. Okay, and it is a rent management system in which you manages the tenants record, their payments and things like that, and it is a good project. So you can say that there is only just one project which is really good and impressive. I can brag about it in interviews. So this is it. And talking about the domains, so it was from web development only. So, there. गया मैं तो अरे बच गया कितना बड़ा गलती कर दिया ये I have like three projects. First is Krish Mitra Smart Farming Companion Project. That is very impressive by its name only. And second is Resume Parser and Basic JDBC. That's impressive. ओ, मैं बस चेकमेट होने ही वाला हूँ अभी.
Now we will resign. बुरा हारा आज तो. This was it for today, guys. And Virat Kohli, what is your real name, by the way? Any one of you want to play a chess match before I end the stream and go to sleep? भास्कर तेजा, भास्कर भाई, आप चेस खेलते हो क्या? भास्कर भाई, आपके रिज्यूम्स देख के तो आप बहुत ही इम्प्रेसिव लग रहे हो यार, बहुत अच्छा. लाइक जो स्मार्ट स्मार्ट फार्मिंग कंपेनियन प्रोजेक्ट है वही, लाइक बहुत अच्छा लग रहा है. मैं भी, मतलब जब मैं थोड़ा फिगर आउट कर रहा था आइडियाज कि कैसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, तो वो सब कहते हैं ना कि कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करे, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करे. तो ऐसी एक ही प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती है मेरे घर पे आसपास, कि टेनेंट्स को, मतलब जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, वो कैसे मैनेज करें. ओके, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन. व्हाट एल्स डू यू प्ले? डू यू प्ले वैलोरेंट और VGMI, भास्कर भाई? चेस की स्ट्रीम करने के लिए दूसरा चैनल बनाना पड़ेगा. ओके, बट आई लाइक ऑल टाइप ऑफ गेम्स, आउटडोर, इंडोर, ब्रेन गेम्स. I had played cricket professionally. I wanted to become a cricketer when I was in ninth, and then I failed so bad that I decided to become an engineer in 10th. How crazy, right? Okay, by the way, have you got any offer, Bhaskar bhai, as of now? Every Indian stream. That is so true. We grow up playing cricket only. Every Indian is growing up playing gully cricket. And from which college you are, Bhaskar bhai? You're trying off campus. It is difficult getting hired in off campus. I'm so lucky. I feel really lucky that my college is good with placements. I don't know how, but they are bringing enough companies at least to get good opportunities. But the scenario in my city, like other colleges, tier 3 colleges in my city, are not that good enough with the placements. Okay, now I will have to end the stream. ओके विराट कोहली भाई, कल मिलते हैं. अब से मैं रेगुलर स्ट्रीम करूंगा, डेली प्रॉब्लम्स सॉल्व करूंगा स्ट्रीम पर. स्ट्राइवर की A to Z शीट खत्म करनी है कुछ ही दिन के अंदर, लाइक अराउंड 30-40 days. Okay, so I will be streaming regularly. This was it for today. Thank you so much for joining.
And thank you so much for joining, Virat Bhai. And you motivates me a lot. You are my inspiration. Okay, thank you so much. Bye bye. Good night. Sweet dreams. Bye. Okay, Virat Bhai. Good night.